अभी अपन बढ़ते हैं टास्क 2 के ऊपर। देखते हैं इन्होंने हमसे टास्क 2 में क्या पूछा है। The board agreed that a radical response to the current situation was required to reassure the investors and stock market by showing them that SmartWear board remained in control of the business and was willing to take essential action when necessary. The board decided that company needed to rationalize its operations by using 20 worst performing retail outlets. Okay, by rationalizing 20 were performing retail outlets in Noria and withdrawing entirely from neighboring country of Centrum Bhai, where SmartWear 15 retail outlets were all suffering heavy losses and showing absolutely no signs of recovery. They evaluate the strategic and ethical implications of SmartWear, of planned shop closures in Noria, and the withdrawal from Centrium. Okay, okay. तो हमें फिलहाल क्या क्या होता है स्ट्रेटेजिक एंड एथिकल इम्प्लीकेशंस। ये लोग कंप्लीटली उस मार्केट से अपने आप को इरेडिकेट ही कर रहे हैं। ठीक है। The allegation that have been made working with some supplier factories have been challenged and to be unnoticed by the buying team. If the supplier had been more effectively monitored, then buying department would have identified a clear contravention of the general terms and conditions contained with all smartware supply contracts. These standard terms are a reflection of smartware's own public social responsibility comments. The buying department operates as a cost center. The buyer's primary motivation is always to keep the cost down. ठीक है, reported week. We report to senior management so that an appropriate and measured response be made. However, the word serious is rather subjective and entering. पता नहीं यार, ये है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऑलमोस्ट एक टास्क फिनिश कर चुका हूँ, दूसरे टास्क के हाफ क्वेश्चन पे हूँ, और मुझे ये एक्सैक्ट समरी ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ये मुझे किस काम की है फिर, क्योंकि मुझे कहीं पे यूज ही नहीं करने को मिल रही है ये चीज तो। देखो यहाँ पे ना ये शॉप क्लोजर्स हो रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे शॉप क्लोजर्स हो रहे हैं। मूविंग इनटू लिक्विडेशन, ये भी किसी काम का नहीं है। और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल अप्रेजल का वो मेरे को पता नहीं। Now, when I'm writing this, मैं क्या क्या लिख सकता हूँ सबसे पहली बात तो इसके अंदर, ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू रीअश्योर इन्वेस्टर्स एंड स्टॉक मार्केट बाय शोइंग देम remained in control of the business and was willing to take essential action when necessary. अभी the board decided that the company needed to rationalize its operations by closing the 20। देखो सबसे पहली बात तो द डिसीजन टू क्लोज द ये इन सेंट्रियम, उसके लिए इट इज स्टिल फाइन बिकॉज द ओनली इंडस्ट्री दैट वाज एक्चुअली हेल्पिंग अस, the only dominant business sector which was helping us was the tourism industry. As was the tourism industry that the tourists could have bought clothes from, the tourists could have been attracted towards our clothes style and products, so that परचेजेस कैन बी मेड वगैरह, लेकिन अभी यहाँ पे वैसा हो नहीं रहा है। ठीक है। Not just that, but there are various other issues as well. The average annual earnings was itself 38,500, which was which was much lower than what we were earning in Noria. The unemployment rates were increasing. The unemployment rate were increasing year on year.
and the population that we were targeting was also less. ये अपन बोल देंगे, ठीक है। we इन्फ्लेशन के बारे में कहाँ है, इन्फ्लेशन रेट was continuously rising and we would not have been able to sustain in the market because we are a low cost company, मतलब ऐसा वो लो प्राइसिंग कंपनी, इसलिए सेंट्रम से पैसे निकालना बेस्ट ऑप्शन था फिलहाल के लिए, अपन ये बोल देंगे। Currently, we are facing significant infrastructure costs and overheads to carry out because we are much larger business than what we previously were. Therefore, closing business could have occurred. इसलिए इसलिए बिजनेस फिलहाल क्लोज करना पड़ रहा है, वो ठीक है। अभी मतलब फिलहाल के लिए वो 20 स्टोर शायद बंद करने पड़ रहे होंगे बिकॉज उनका ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ज्यादा है। अभी इसके लिए स्ट्रेटेजिक क्या हो सकता है, ओनली दोज 20 outlets should be selected whose costs are exceeding the benefits which have been gained from it. Therefore, appropriate cost benefit analysis should be undertaken. The institutional investors further suggested to me that the strategic direction of the company is completely wrong and the SmartWear has become out of touch with its core customers. एक मिनट, completely wrong, ठीक है। He suggested that this is the main reason why company has been losing sales to competition, and unless the board makes radical changes, situation may get far worse. Okay. सो एक्चुअली जो बाकी के 80 स्टोर्स है उसके अंडर हमारे कोर कस्टमर्स और कोर एरियाज ऑफ बिजनेस, यानी कि कोर लोकेशंस में ही खुलनी चाहिए वो बाकी के 80 स्टोर्स, ऐसा अपन बोल सकते हैं। आई एम अफ्रेड दैट सिंपली इन्फॉर्मिंग अवर इन्वेस्टर्स दैट थिंग्स आर एज बैड एज दे थॉट विल नॉट रीअश्योर देम, things are as bad as they thought will not reassure them about the board's ability to turn around the business. The absence of detailed and accurate information about the customers and lack of technology to systematically capture and analyze such information is putting SmartWear in a competitive disadvantage. Therefore, I propose we engage services from an external। वो ठीक है। हम्म, नौरिया में एक्चुअली ना बंद करने से पहले हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए बिकॉज द क्लोजर ऑफ 20 स्टोर 20 वर्स्ट परफॉर्मिंग, now these 20 worst performing retail outlets might not be generating us revenue. However, there could have been free advertising which would have been able to do, which company would have been able to do in the minds of the customers. Therefore the sales would have been attracted not to maybe these outlets but maybe other outlets of of Noria. There could have been a, क्या उसको उसका कुछ नाम है उस इफेक्ट का, कारण कुछ तो नाम है, सेकेंडरी इफेक्ट नहीं, देयर वुड हैव बीन a reputational effect that because of the good reputation of 20 uh, because of the reputation of these 20 stores, other stores would have gained the sale, ऐसा मैं कुछ तो बोलना चाहता हूँ। Secondly, redundancy cost should be taken into consideration because these 20 worst performing retail outlets would have certain employees working in them. uh, it should be priorly in, therefore वो prior inform करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतना 16 मार्क्स के लिए मैं सबसे पहले इतने तो कम से कम लिख देता हूँ, देन आई थिंक आई कैन गो अहेड। फ्रॉम टू अंडरलाइंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विच में अराइज फ्रॉम स्ट्रेटेजिक डिसीजन। चलो ठीक है, देखते हैं, पहले इतना लिख देता हूँ। तो मैंने कुछ तो आंसर लिखा है, पता नहीं मुझे इतना पसंद नहीं आया एंड मैं आंसर लिखते लिखते ये वाला बहुत ऐसे बोर हो गया था एंड मतलब मन ही नहीं किया क्योंकि मेरे को अच्छे से आया ही नहीं है वाला आंसर लिखने को। लेट्स देखते हैं क्या लिखा है। हम्म, तो हाँ, ये स्मार्ट वेयर का ना, मुझे इसमें खोलना पड़ेगा। डीसी में स्मार्ट वेयर आंसर, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। 2A, decision to close down 20 performing retail outlets in Noria and withdraw and close all 15 stores in country or centrum presents a number of strategic implications for SmartWear.
These closures represent a reduction of between 15 to 20% of current business operations, although this does not necessarily equate to a similar reduction in revenue and may improve overall reported profit. It will give the impression of, to the market that the business is contracting. As such, it might be more difficult for the company to raise finance for new investors, particularly if the stock market reflects the perceived downsizing with a commensurate fall in its share price. Wait a second. Okay. The financial resources which would be released from the sale of any redundant property as well as savings in running costs could be assigned to more lucrative profitable areas of the business. Alternatively, these funds could be used to invest and grow the business in countries where conducive to the SmartWear business model such as Southland. तो मैंने यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि हमारे हमको पैसे देने पड़ेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट है हमने रेंट वगैरह पे लिया रहेगा, हमने परचेज किया रहेगा, तो ये हमें सेलर, तो हमें उसके लिए बायर ढूंढना पड़ेगा और हमें कॉन्ट्रैक्ट एंड करना पड़ेगा। तो जब हम इमीडिएटली एंड करेंगे तो शायद हमें कुछ कॉन्ट्रैक्ट फीस भी देनी पड़ सकती है, मैंने ऐसा लिखा हुआ है। द डिसीजन टू क्लोज so many retail outlets at one time for purely financial reasons may prove very unsettling and disconcerting to employees not directly affected by planned courses in any in any service company like SmartWear, where they are heavily reliant on the performance of their employees. It is essential that staff remain closely engaged in the business at all times. Therefore, the board will need to set aside sufficient resources for a change management program which not only covers the planned courses, so this not only covers the planned closures but also manages the remaining business and communicates the rationale behind the decision to all key stakeholders. It might also be necessary for public relations exercise to be conducted to preserve the company's reputation in the wider marketplace. ठीक है, फिर आता है withdrawing entirely from the country may have considerable implications on the company, both financial and legally. They There will undoubtedly be statutory redundancy payments due. वह ये मैंने बराबर से लिखा हुआ, मैंने वो redundancy payments के बारे में बराबर से लिखा हुआ है। आई थिंक मैं सबसे बड़ा हगा पता है कहाँ पे, मैंने ना यहाँ पे हक दिया, मैंने ना सेकंड पॉइंट में हक दिया कि जो राइजिंग इन्फ्लेशन रेट है उनके वजह से हम लोग बैकलैश हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना इस पॉइंट में बता दिया कि क्यों हमें करना चाहिए, लेकिन शायद ये सेकंड पॉइंट में मैंने गलती से मैं उस डायरेक्शन में चला गया कि हमें क्यों बंद करना चाहिए कंपनी को, उसका इसमें वो दूसरे इसमें, ऐसा मैंने वैसा देख लिया, विच विच वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। ये कहा क्योंकि इनमें पॉइंट्स आ ही नहीं रहे थे, तो पहले कौन से पॉइंट, ये अच्छे पॉइंट्स थे कि रनिंग कॉस्ट सेव हो जाएंगे वगैरह वगैरह, तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। Considerable implication on the company, both financially and legally. There will undoubtedly be statutory redundancy payments, and these may be significant depending on the number of staff employed and their length of service. There may be prescribed redundancy procedure. There might be a prescribed redundancy procedure to follow to ensure that company is fully compliant with local employment law. There could also be residual taxation issues which need to be addressed before SmartWear can repatriate its invested funds and completely withdraw from Centrium. नहीं यार, ये तो ठीक है, ये लेंथ ऑफ सर्विस और रिडंडेंसी पेमेंट्स ठीक है, बट यार वो पॉइंट अगेन नाक के नीचे का वो पॉइंट था, वो जो है फॉरगॉट की था सॉरी, कि हम लोग जो रेंट पे कर रहे हैं, जो रनिंग कॉस्ट है हमारा, वो हमारा सेव हो जाएगा, तो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। एंड दे हैव सेड बिकॉज ऑफ our closing of the stores there will be a decline in revenue and overall increase in profits which will look good, um, in terms of profits. However, because of decreasing revenue it will look bad that the market is concentrating for us, ऐसा वो अच्छे पॉइंट्स थे। एथिकल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द डिसीजन, एक मिनट, एथिकल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द डिसीजन टू बोथ reduce activity in Noria, close operations entirely in Centrium should be carefully considered as it is pragmatic in purely business sense.
ठीक है, स्मार्टवेयर इज करेंटली incurring heavy losses which can be attributed to the underperforming operations in Korea and Centrum, and there is no reliable signs of recovery or turnaround. Consequently, the decision is in the best interest of the investors in Smartware, to whom the board has fiduciary duty. It would be unethical to continue to operate knowing that it's destroying. Oh, bhai sahab, इन्होंने एथिकल इम्प्लीकेशन को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। ये एकदम बेसिक पॉइंट है कि मतलब इन्वेस्टर्स की वेल्थ बचाना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग इसको नहीं फॉलो करते, अगर हम लोग फिर भी ऑपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो हाँ, तो ये अनएथिकल बन जाएगा। मैंने लिखा कि ये बंद करने पे क्या एथिकली इशू देंगे, मैं बस वो सोचते रह गया। विच वॉज वेरी चूतिया थिंग टू डू, बट मे बी ठीक है। The fairness of the decision depends on whose perspective is being considered. Those employees who are made, हाँ ये तो मैंने लिखा हुआ है, may consider that they have been treated unfairly by Smartware. However, if objective criteria have been fairly and consistently applied, then taking the decisions, then taking the decision, then company cannot be accused of acting unethically. The fact that all unaffected retail outlets, sorry, the fact that all affected retail outlets are to close means that all staff are to be made redundant. So in legal terms, no employees are being unfairly dismissed. मैं ऐसे लिख सकता था कि there would have been protest by the trade unions for prior inform because we did not prior inform them prior. So इसलिए हमको उनको prior inform करना चाहिए priorly, ऐसा। There appears to be no legal reasons why company cannot reduce its operations in Noria, withdraw from Centrum, and make staff redundant. So, provided that Smartware has strictly adhered to relevant employment legislation, there is no legal impediment to take this decision. The decision may ultimately preserve far more jobs elsewhere throughout the company over the long run. Therefore, on balance, the decision is the ethical right course of action for the company if it will help it to prosper and remain an ongoing concern. Okay, मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने एक्चुअली ऐसे लिखा। एक्चुअली मुझे वो लिखना चाहिए था कि इट इज नॉट अ अनएथिकल प्रैक्टिस टू क्लोज अ कंपनी बिकॉज हम बंद हो रहे हैं। मैंने इसको ऐसे लिखा कि अब जब हम बंद कर रहे हैं, हमने भी अगर प्रायर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया होगा और कोई गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा फॉर मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो ब्रीच हो जाएगा। एंड फॉर दैट पेमेंट्स हैव टू बी मेड, एंड देयरफॉर एंड अगर फिर उसके बिना गवर्नमेंट को बिना इन्फॉर्म किया अगर हमने बंद कर दिया, तो दैट मीन्स वी आर नॉट एक्टिंग एथिकली और प्रोफेशनली। मैंने ऐसा लिख दिया उस आंसर को, जो नाउ आई थिंक ठीक ही है। यार ये सोशल फुटप्रिंट मैंने सोचा ही नहीं था, मैंने एनवायरमेंट में सोच रहा था, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था, लेकिन जाने देते। द सोशल फुटप्रिंट विच वुड बी लेफ्ट फॉलोइंग स्मार्टवेयर विड्रॉवल फ्रॉम सेंट्रियम may have residual damaging consequences for the country's economy. With rising unemployment, it is quite probable that the redundant staff will find it difficult to obtain alternative employment. ये तो मैंने लिखा हुआ है, ये तो मैंने दोनों जगह पे लिखा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयज के बारे में मैंने दो जगहों पे लिखा। ओ भाई, ओ भाई, इन्होंने एक जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ऐसे लिखा कि एम्प्लॉयज को लगेगा कि हम अनफेयरली डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सारे ही स्टाफ को डिसमिस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ अनएथिकल नहीं है। और दूसरी जगह पे बोला कि हम लोग एम्प्लॉयज को रिडंडेंट कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हम लोग ने मतलब उनके लिए बिना कोई जॉब ढूंढे ढूंढे हम लोग ने डायरेक्टली उनको रिडंडेंट कर दिया, ऐसा। दे हैव रिटन इन दोस टू सेंसेस। भाई दो पॉइंट सिर्फ बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। Conclusion: viewing all the national influencing factors holistically, it is apparent that Southland offers a good business environment for clothing retailer like Smartwear. Results over the first 6 years that Smartwear has been operating in this country illustrate that the market is well established and the good strategic fit for Smartwear's business model. If the board is considering further growth opportunities, then developing the Southland market further appears a suitable option to pursue. तो मैं ऐसा लिख सकता था कि the cost which have been saved in through the operations made in Centrium can be invested in the market of Southland, ऐसा। If the board is considering further growth opportunities, then development, ठीक है। The the decision to reduce capacity in Noria and withdraw completely from Centrium seems on balance to be ethically acceptable. The consequences to those losing their jobs may seem harsh, but the outcome may ultimately deliver the greatest good
to SmartWear, its investors and its many stakeholders. एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऊपर ना बोला था ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट वर्ड सही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हम लोग उनको निकाल रहे हैं, सो ट्रेड यूनियंस में भी कंप्लेंट्स करेंगे या फिर लीगल क्लेम्स करेंगे, ऐसा वो वर्ड बोलना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। इन्होंने क्या बोला, ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, नहीं एक मिनट में ऊपर है, द चीफ एग्जीक्यूटिव समरी, फाइनली ये समरी का कुछ तो काम आया। द चीफ इज द एग्जीक्यूटिव summary of an internal audit report on SmartWare supply chain management has been given to you by the chair of the audit committee, ठीक है। The report identified a number of significant issues in areas such as appraisal of existing suppliers' performance and internal reporting provisions. एक मिनट, the report a number of significant issues in areas such as appraisal of existing suppliers' performance and internal reporting provisions. Okay, on behalf of the board of directors, the chair of the audit committee. Sorry, समझा। On behalf of the board of directors, the chair of the audit committee has asked you to provide the buying and merchandising director with an objective of appraisal। अच्छा, मुझे इन दोनों को एक ऑब्जेक्टिव अप्रेजल देना है of the supply chain management arrangements at SmartWare to effectively address the various issues raised at the report। मेमो, तो ठीक है अभी के लिए, अच्छा ठीक है, टू फ्रॉम वो लिखना होता है मेमो में यूजुअली, ऐसा मैंने देखा है लोगों को लिखते, तो मैं डू फ्रॉम डेट एंड वो टॉपिक वो लिख दूंगा। Draft a memo to the my buying and merchandising director, which evaluates the effectiveness of the internal control systems at the company, particularly on the procurement side, and recommends control improvements. Okay, to rectify the identified areas of concern। ठीक है, देखो लेट्स कीप इट सिंपल। सबसे पहली बात तो इवेल्युएट करना है करंट इंटरनल कंट्रोल्स को, पर्टिकुलरली ऑन द प्रोक्योरमेंट साइड, ठीक है। और रेकमेंड करना है इम्प्रूवमेंट्स। तो मैंने ऑलरेडी इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल में बता दिया रहेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा इंटरनल कंट्रोल में। उसके रिकमेंडेशन और इम्प्रूवमेंट मुझे खाली नीचे बताने हैं, ठीक है। द रिपोर्ट analysis and sorry analyzes the report analyzes the effectiveness of the supply arrangements between SmartWare and its core suppliers, all of whom are based in countries in Southeast Asia. The report itself was requested by the audit committee when information about alleged poor working practices among some suppliers was brought into attention. Okay. However, the scope of the internal audit extended beyond this narrow social responsibility issue into broader operational and financial management aspects of the SmartWare supply chain. The supply chain management is particularly important to SmartWare. The supply chain management is particularly important to SmartWare because as a retailer, a very significant proportion of the direct cost relate to inventory purchases. Supply chain management is particularly important. The supply chain management is particularly important to SmartWare. Okay, supply chain management is particularly important to SmartWare. As a retailer, a very significant proportion of the direct cost. Okay, हाँ मेरे को एक्चुअली वो मैं ब्लैंक आउट हो गया ये सेंटेंस पे, मैं वही सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या सेंटेंस आ गया। तो जो बाकी के डायरेक्ट कॉस्ट है वो सप्लाई चेन में जाते हैं, ठीक है, इन्वेंट्री परचेजेस में जाते हैं, विच इन टर्न डायरेक्टली इम्पैक्ट द कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर रिटर्न्स, ठीक है। Appraisal of the existing suppliers' performance. Most suppliers have been working with SmartWare for more than 5 years uh, and there have been no reported instances when purchase orders have not been completed on time or in full. This has led to a rather complacent attitude from the buying wood department, who do not see the point in fixing something that isn't broken. Who do not see the point in fixing something that isn't broken. Okay.
As a result, if no quality problems arise, the buyers rarely contact the suppliers, which lead to a culture of carelessness. Okay. Arise. Whereas the buyers rarely contact the suppliers, ठीक है. Supply contracts are awarded for a period between 3 and 5 years. ठीक है. सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पीरियड ऑफ 3 to 5 years के बीच में है. ठीक है. With prices charged indexed to inflation. वो ठीक है. This means that prices rise annually by only a few percentage points, which is then built into the smartware budgeting process. It is built into the smartware budgeting process. No effort is made by the buying department during the contract period to compare what prices the company is paying to its suppliers compared with the industry average competition. अच्छा, तो ये एक है कि हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कि भाई फिलहाल इंडस्ट्री में प्राइस रेट क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, जो शायद हमें करना चाहिए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगर इंडस्ट्री में कम चल रहा होगा तो हम लोग ज्यादा पे कर रहे होंगे ऐसा. The allegations have been made about poor working conditions in some supplier factories have gone unchallenged and even possibly unnoticed by the buying team. If these suppliers had been more effectively monitored, then the buying department would have identified a clear contravention of the general terms and conditions contained within all smartware supply contracts. These standard terms are a reflection of Smartware's own corporate social responsibility comments. However, as a buying department operates at a cost center, however, as the buying department operates at the cost center, the buyer's primary motivation is always to keep costs down rather than monitor the ethical practice of the suppliers. Hmm. So ethical practices have been ignored. एक है कि industry average comparisons have been ignored. अ, हम्म, ठीक है. Reporting weakness. There is an exception. Sorry, there is an expectation that any serious breach of supplier performance or unacceptable behavior would be reported to the senior management so that an appropriate and measured response could be made. However, the word serious is rather subjective and is entirely up to the buying department whether or not to escalate any matter. Consequently, if a serious issue is not raised, consequently, if a serious issue is not raised, then the buying and merchandising director would not be aware of any problem and so would not bring it to the attention to the board. The absence of formalized regular reporting means that supply chain issues are only ever considered by the board of Smartware when an exceptional event occurs, and this is not been the case over the past 2 years. Therefore, the board has been working on an assumption that supply chain management in the company is operating efficiently and effectively. When its audit has shown this is not the case, this represents a serious internal control weakness which needs to be rectified. तो इसका recommendation तो एक ही है कि इसके लिए जो है supplier contract should be provided to the audit board along with the supplier performance reports, which the boards need to pay attention to. Like reporting, there should be a regular reporting measure that comes into play because during the absence of formalized reporting means that the supply chain issues will ever be considered if only when an exceptional event occurs. However, there can be serious issues other than just the exceptional events. ये भी बोल सकते हैं. एक तो हमने कंपेरिजन नहीं किया, वो गलत है. These and have gone unchallenged and even possibly unnoticed by the buying even suppliers had been more effectively monitored, and the buying department would have identified a clear contravention in general terms and conditions contained within all supply contract. पता नहीं. ये देखो, ये जो है ना, एक तो
our prospect should also be following the same perspective, or we should be following the same sustainability goals, or rather, should have the same vision, mission that our company has. Therefore, uh, if there were certain issues such as poor working conditions which have been seen, then working condition that have been seen, then smartware company should have contacted their suppliers and should have discussed these issues. ऐसा हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री से कंपैरिजन करना चाहिए, वो ठीक है. Any senior management, any serious breach of supplier performance or unacceptable behavior would be reported to the senior management. There is an exception that any serious breach of supplier performance or unacceptable behavior would be reported to the senior management. हम्म. देखो, इन्होंने ये सीरियस वर्ड को सब्जेक्टिव रखा हुआ था, है ना. The buying department whether or not to escalate that matter. So there should be a material measure or event that should be discussed with the buying committee or the buying department, so that so that if there's any unacceptable behavior or any behavior which seems to be odd on part of the suppliers, then that can be discussed and sorted out. Um, because it seems that the buying department of कौन है ये this company only, SmartWear, were not reporting the matters to the board. ये अपन बोल देंगे. तो आई थिंक ये चार इश्यूज फिलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि अभी लिखने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा सोच भी नहीं सकता ना एग्जाम हॉल में. Task 2B memo to buying and merchandising director. Same consultant supply chain issues, ठीक है. The recent internal audit report on the supply chain management arrangements at the SmartWear highlighted a number of issues which require your immediate attention. There were three areas which clearly indicate internal control weaknesses with the procurement processes at SmartWear that illustrate operational inefficiencies and have negative impact ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ठीक है, ये मैंने बराबर से इंट्रोडक्शन इतना तो ठीक ही है. इंट्रोडक्शन इज फाइन यार, ठीक. अंदर के जो कंटेंट है वो तो देखो, मैंने इवेल्युएशन चार लिखे हैं ऐसे, और रिकमेंडेशन भी चार लिखे हैं. मैं मैच करूंगा कि मेरे कितने सही होंगे कितने सही है, फिर देखते हैं. Cost controls. As already stated, the buying of clothing from overseas suppliers comprises a significant proportion of the smartwear cost structure. However, as the business is positioned at the low price end of the market, the only way that margins can be sustained is through very effective cost control. ठीक है. So, internal audit report claims that the culture of carelessness has developed among smartwear buyers who do not engage closely with the clothing suppliers. This result is that the cost of the individual supply contracts is not periodically reviewed or compared against industry averages, and only renegotiated when they come up for renewal after several years. This means that the smartwear could be incurring avoidable increases in its cost base and a resultant erosion of the gross margins. This is particularly damaging during the periods of economic difficulty when other structural costs are rising due to higher inflation, but the company is unable to raise its own selling prices to compensate without damaging its competitive position. Um,
अवॉइडेबल कॉस्ट भी एक्चुअली मैंने ना ऐसे दो पॉइंट लिखे हुए हैं विच इज द सेम थिंग। ऐसे जो फॉर्मूला सप्लायर्स का देखो, सप्लायर देयर इज नो सप्लायर कंपैरिजन, ये वाला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्टली देयर बीन अ कंपैरिजन एटीट्यूड, ये तो मैंने लिखा ही है। बिकॉज बिलीव इन, इसके वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं, तो कंप्लेसेंट पॉइंट और नो सप्लायर कंपैरिजन, ये इसमें दो पॉइंट्स बनाए हुए हैं विच इज फाइन, तो मैंने बिल्कुल सही से किए हुए हैं। इसका इसका वो रिकमेंडेशन अब भी पढ़ लेते हैं। The buyers need to be tasked to be more proactive in their management of the supply contracts to ensure that the company is getting best value for money. बराबर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी शॉर्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी वो शॉर्टन कर सकते हैं टू अलाउ फॉर एनी पोटेंशियल कॉस्ट सेविंग्स टू बी रियलाइज्ड मोर फ्रीक्वेंटली। उसके बाद मोर फ्रीक्वेंटली the careful monitoring of the quality of the products manufactured and the efficient delivery of the orders placed should ensure that the suppliers aim to meet continuously they ensure suppliers continuously meet the terms of the contract with the supplier। तो अच्छा, तो क्वालिटी तो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिटी, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये वो सप्लाई पीरियड को शॉर्ट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को शॉर्टन करने के बारे में नहीं लिखा, लेकिन मैंने ये लिखा कि रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए, कंपैरिजंस होने चाहिए। इसमें किधर तो लिखा है जो मॉनिटरिंग ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी अंडरटेकन, रिपोर्ट शुड बी सेंड टू द बाइंग डिपार्टमेंट सो एज टू अपडेट देम ऑन द चैलेंजेस। अच्छा, मैंने ये लिखा हुआ है कि सेंड शुड बी सेंड टू द बाइंग डिपार्टमेंट हेड। हेड लिखना चाहिए था, मैंने हेड नहीं लिखा, बाइंग डिपार्टमेंट हेड सो एज टू अपडेट देम ऑन द रिसेंट चेंजेस इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो वो अपन लिख देंगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू। अभी कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज में क्या था कि बेसिकली जो उनके जो एथिकल ये जो है ना, वो लोग उस चीज को भूल रहे थे। बेसिकली सप्लायर्स के कंपनी में कुछ खराब चल रहा था, तो वो हमने इग्नोर ही कर दिया, ऐसा हो गया। लेकिन हमारे प्रॉस्पेक्ट का सेम होना चाहिए ना विजन, उन्होंने कुछ खराब नहीं करना चाहिए ऐसा। द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस स्टिपुलेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स वर्कफोर्स, हाउएवर recent reports have clearly indicated that some smartware suppliers have been in breach of this contract term but the buying team has not challenged these manufacturers practices. This could be because the buying department is under pressure to maintain low cost, so they do not wish to impose additional costs on the suppliers who may want to pass them, okay, pass these on smartware। तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर, ओके, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है कि अगर हम लोग ने बोला सप्लायर को कि यार तुम तुम्हारे एम्प्लॉयज को सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो वो फिर वो लोग बोलेंगे कि अच्छा, हमें सही से ट्रीट करने के लिए हमें हमारे कंपनी के जो वर्किंग कंडीशंस है उनको हमें मतलब बेटर करना होगा, और उनको बेटर करने के लिए हमें लगेगा कॉस्ट। तो वो कॉस्ट हम तुम्हें ज्यादा प्राइस चार्ज करके इन करेंगे, तो फिर वो चलेगा ऐसा। So a stated strategic goal of the company is in its mission statement is to function at the highest standard of social responsibility and expects the same from its suppliers. It is therefore wholly unacceptable to knowingly permit such unethical practices to continue for a financial expediency. Okay, this has been compounded because the issue was not reported to the board, and now this association may damage the reputation of smartware with consumers and investors। ये मैंने काफी बेटर लिखे है एक्चुअली आंसर, जैसा मेरे को लग रहा है। ऑब्वियसली इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी टू मेक श्योर दैट prospects आर एक्टिंग इन द सेम मैनर और द सेम वे विजन और विद द सेम विजन एज द कंपनी इज देयर देयर फॉर इट इफ, अच्छा, देयर फोर, अरे मैं देयर फोर लेना चाहता था। Therefore, if there were allegations made about poor working conditions in some supply factories, then they should have been challenged by SmartWear. Because our procurement team's attitude and unprofessional behavior, these issues have gone unnoticed. Because of our procurement team's attitude and unprofessional behavior, these issues have gone unnoticed। um, मुझे पता नहीं, मुझे वो अनएथिकल प्रैक्टिस ये वाला वर्ड शायद डालना चाहिए सर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड शुड नॉट हैव बीन कंडक्टेड ऐसा।
मॉनिटरिंग एक्टिविटीज ऑफ द, ये मैंने कुछ, ये मैंने बहुत ही एक एक लाइन लिखी मैं सिर्फ इसके रिकमेंडेशन में। मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ सप्लायर्स एथिकल प्रैक्टिसेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कीपिंग ट्रैक ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस। पता नहीं मैंने एक लाइन क्यों 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 लिखी, मुझे और मैं और इसमें कॉपी पेस्ट करके लिख सकता था कि वो ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट करके लिख सकता था कि दे शुड हैव बीन चैलेंज्ड बाय स्मार्टवेयर whenever such allegations are or whenever there is a suspicion on the or something। शायद मेरे को लिखना चाहिए था। Those suppliers who are in clear breach of their supplier contract need to be formally advised that they must immediately bring the working conditions at their factories up to the minimum acceptable standard or the contract will be cancelled। पता नहीं यार ये मैंने क्यों ऐसा किया। बेड़ा ये कहाँ था। चलिए ये बताइए, ये मुझे कॉपी पेस्ट नहीं यहाँ से ही करना चाहिए था। मैं एक्चुअली कम कॉपी पेस्ट करता क्यों किया, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करो तो यहाँ पे पूरा वो अटैच होके आ रहा है। इसमें देखो वो स्पेस जो है ना वो इधर कॉपी पेस्ट हो नहीं रही है, इसलिए मेरा वो मन चला गया। आई थिंक मैं शायद कर भी सकता था। हम्म। एक मिनट ना। जनरल टर्म ऑफ द कंडीशंस कंटेन्ड इन द सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ द but social responsibility commitments however as the buyers। ये एक्चुअली सीएसआर थे, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इन्होंने नहीं मेंटेन की, इसलिए मेरे को कॉपी पेस्ट करना चाहिए था। नहीं वो मैं नहीं किया। ठीक है। However, their remedial actions will need to be independently validated, and that this might best be achieved through smartware auditors making periodic unannounced spot checks at supplier factories. Nice. A concerted a concerted public relations effort will need to be made to reassure the buying public and investors that Smartware has taken the necessary action to deal with the issue. This will require the drafting of a clearly worded statement communicated on the most appropriate media. It is also important to stress to the buying department that although prudent financial management of the supply chain is the key to business success, any unethical behavior presents a major risk to the company. Any unethical behavior presents a major risk to the company। ओके। अभी आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स थर्ड पार्ट, ओवर रिपोर्टिंग अराउंड सप्लायर रिलेशंस। इन्होंने कैसे लिखा है, की टू एनी कंट्रोल सिस्टम इज रेगुलर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑन परफॉर्मेंस so that any problems or serious issues can be identified and rectified without unnecessary delay। की टू एनी कंट्रोल सिस्टम रिपोर्टिंग, हाँ ठीक है। ओके, उन्होंने खाली ओपनिंग दिया है कि बस हमें रिपोर्टिंग करना चाहिए था, इसका रिपोर्टिंग मैंने खाली बेसिक ही लिखा है कि ये लोग करते नहीं थे वगैरह वगैरह। At Smartware, only those issues which were considered to be of serious nature are brought to the attention of the board and the senior management। However, the basis upon the which the term serious is defined is open to wide interpretation। ये तो पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो इसमें से एग्जिबिट में से। the result is the that low level staff are deciding which matters need to be escalated, and this in turn could lead to cover ups or business failures going unaddressed। Procurement is a core function of the smartware business, since it accounts for a significant proportion of the direct cost and so influences। एक भाई सब ये तो पूरा कॉपी पेस्ट है। The board being accountable to shareholders must ensure that the safeguards for corporate existing shareholder returns। Okay, however, in the absence of reliable and complete information, the board is अच्छा currently unable। Okay, तो इन्होंने बस ऐसे ओपनिंग दिया कि शेयर होल्डर का पैसा बचाना ये डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी होती है, बिकॉज वेल्थ मतलब वो प्रोटेक्टिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ वाला पॉइंट डाल दिया। देन लेकिन ये लोग करना तो चाहते हैं लेकिन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से ये लोग कर नहीं पा रहे हैं, अनेबल टू discharge its duties effectively। This leaves companies investors exposed to avoidable low returns। मैंने इसमें लिखा है, मैंने इसमें लिखा है मटेरियलिटी लेवल जो होती है, मटेरियलिटी लेवल में अगर मैं नीचे लिखा है कि कितनी हाई सेट करनी चाहिए रिकमेंडेशन में, और नीचे लिखा है एब्सेंस ऑफ फॉर्मूला। तो जिसकी वजह से बोर्ड को एक परसेप्शन बैठ जाएगा कि भाई सारा काम सही चल रहा है।
ऐसा मैंने ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे क्या है, पुअर रिपोर्टिंग अराउंड सप्लायर रिलेशनशिप, स्टैंडर्डाइज प्रोक्योरमेंट रिपोर्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड सबमिटेड टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑन अ frequent basis. these these reports must provide an update on the current supply contracts and remove any subjectivity by defining the reporting parameters. This control will ensure that the procurement team do not become complacent and manage the, even ये भी मैंने लिखा है कि हमारे इसके वजह से complacent नहीं, वो नहीं होगी टीम, and manage the supply chain effectively and in the best interest of the company. Through these reports, the board will be fully aware of this important aspect of SmartWare's business model and so can take appropriate action to optimize operational and financial performance. नाइस, ये अच्छा है काफी, मैंने काफी सारे पॉइंट्स बराबर लिखे, बट हाँ वो सीएसआर वाला पॉइंट कॉपी पेस्ट करना चाहिए था। और फैक्ट्री शुड बी कैंसल्ड, वर्किंग, हाँ एक और है, जो हम सप्लाई साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं प्राइजेस के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, उसका हमें पीरियड कम करना चाहिए था कि वो बहुत ज्यादा हो रहा था। अ, हम लोग ने इसीलिए शायद उन लोग को वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो लोग कॉस्ट का इनकर करेंगे तो वो लोग हमारा प्राइसेस बढ़ा देंगे। हाँ लेकिन लेकिन हमें करना चाहिए था, हमें क्लियरली अगर कोई सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ब्रीच हो रहा है टू फॉर्मली एडवाइस इमीडिएटली ब्रिंग दी वर्किंग कंडीशन फैक्ट्रीज अप, मतलब हाँ उनको वर्किंग कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बोलना चाहिए था। मेडिकल पब्लिक एफर्ट और पब्लिक इन्वेस्टर्स, वो ठीक है, पब्लिक इन्वेस्टर्स ठीक है। वांट टू स्ट्रेस दैट द बाइंग डिपार्टमेंट दैट ऑल्दो प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन इज की बिजनेस। हाँ ये देखो, ये वाला लाइन भी बहुत सही थी। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस ऑन टू द बाइंग department that although prudent financial management of the supply chain is key to business success, any unethical behavior represents a major risk to the company। ये एक बहुत अच्छे लाइंस है। एक्चुअली ना ये पूरा आंसर ही, मतलब ये टास्क टू जो है ना, ये मुझे पूरा ही बहुत सही लगा है। आई थिंक ये वापस पढ़ने लायक तो है पूरा टास्क टू।